finally watched Sweet Home Season 2. Hello, my name is Surbhi Roth and this is Palette Perfection 23. So as some of you know that I make cooking videos. बचपन से ही मुझे टीवी सीरीज मूवीज एंड लाइक शोज देखने का बहुत शौक था. And I'm presenting a new series where I'll be talking about my favorite TV shows while enjoying good food. Then I'm gonna be talking about Sweet Home Season 2. But first, I would like to do some पेट पूजा. So let's see कि आज खाने में क्या है. Obviously, we need coffee to complete the entire season in one night. So that's why I went with this Oreo Dalgona coffee. Since the theme of the show is dark and gory, I decided to go with this decadent dark chocolate pastry filled with lots of choco chips and lots of cream. So our food is here. I will link down the recipe of Oreo Dalgona latte in the description box below. So आपको अगर बनानी हो तो आप बना सकते हो. Sweet Home Season 2. The theme of today's episode like dark and gory and bloodshot. What are the things that we have learned so far? सबसे पहले हम शुरू करते हैं चा ह्यून-सू से. So far हमें पता चल चुका है कि चा ह्यून-सू का एक विंग लाइक टूट चुका है. Then he has the ability to read monsters' thoughts. Like उसको पता चल जाता है कि they are just human beings who are trying to fight the monster desires inside their head. But are not able to, so that's why they are stuck in that monstrous form. Then in the end we see that like वो बहुत ही injured हो गया badly and his monster side has taken over. And because of that we don't know like next season में हमें कौन सा चाहे हम दिखने वाला है. Let's give this pastry a try. It's really good. लीसी क्यों? मैं उनके रियल नेम यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे प्रोग्राम में उनके नाम याद नहीं रह रहे चांस के अलावा. So we see that in season 1 Lee Si Kyung is pregnant. So season 2 में she gives birth to a child, but the child turns out to be a monster. So she's like heartbroken and all, and we see all her journey throughout the season 2. And in the end she's dying. So उसकी बेटी उसको monster turn कर रही थी ताकि वो मरे नहीं. But she gets this rage inside her head that she wants to kill all the monsters. So Chan Hyun-soo उसको रोकने की कोशिश करता है, but वो उसके thoughts read कर लेता है and he realizes that she is so much in pain, so he kills her. Literally the worst part, like I wanted to see her in next season, but she's dead. yeah, then comes her daughter. Her daughter, which is a mysterious child, she has the power to like turn anyone into monster and obey her by just a simple touch. उसकी story कुछ ज़्यादा हमें पता नहीं चली, but she was a troubled child and she doesn't have any empathy for humans. So next season is gonna be really wild. Oh my god, it's so yummy. The third character that we are going to talk about is the parasite guy. ली जिन वुक की बॉडी में पैरासाइट आ गया होता है जो कि स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सोंग कांग को किडनैप करके मॉन्स्टर्स को बचाने के लिए ले जा रहा होता है. बट देन दे फाइट एंड ही डिसअपीयर्स. लास्ट एपिसोड में देखने को मिलता है जब डॉक्टर लिम हु वाज लाइक ट्राइंग टू मेक अ वैक्सीन टू गेट रिड ऑफ मॉन्स्टर्स उसको एज अ टेस्ट सब्जेक्ट यूज़ कर रहा होता है एंड टॉर्चर कर रहे होते हैं. सो ली जिन वुक इज बैक एंड ही हैज़ डॉक्टर लिम. सो ही इज डेफिनेटली गोना take revenge of what the Dr. Lim did to him. He's going to do the same maybe. Then the next character, Crow Platon. The chief, the head, Captain Tak, he also has turned into a monster but he's trying to control his urges. अभी तक तो वो turn like किसी को पता नहीं चला he is turned into a monster except Dr. Lim. But we'll see how that plays out in the next season. Then the Crow Platon, उनका एक सोल्जर खो गया होता है एंड में. सो दे डिसाइड टू लाइक लुक फॉर हिम इन दैट अबेंडेंड Byeongseum hospital or something, like it's a building old. And there they find out that there are people who are keeping other people as captive and are experimenting on them. And there are monsters. They are monsters. Humans are monsters according to Scooby-Doo. So they tried searching for the lost cadet and they found him, but वो उनको बोलता है कि यहाँ से निकलना मुश्किल ही नहीं है. And then they come across that mysterious child जो उनको उनके लीडर के पास लेके जाती है. And then we see that the head of the Crow Platon is in danger and all the other members as well. They are trapped there. Park Chan Young पूरी सीरीज में वो मिंसी के साथ घूम रहा होता है एंड उसकी प्रोटेक्ट कर रहा होता है. एंड में वो डिसाइड करता है कि वो बेस पे वापस रिटर्न हो जाएगा. He was one of the like really good.
गोमिन्सी पूरे शो में ट्राई कर रही होती है कि वो अपने उपा को फाइंड कर ले लियोन ह्यू, बट उसे लग रहा होता है कि लियोन ह्यू इज द वन हु हैज बीन सेविंग हर ऑल दिस टाइम व्हेनेवर शी इज इन ट्रबल, बट उसे एंड में पता चलता है इट्स जा हिन सू एंड में हम देखते हैं कि शी कन्फ्रंट्स जा हिन सू जब वो मॉन्स्टर बन चुका होता है, एंड दैट्स हाउ इट एंड्स। देन द नेक्स्ट कैरेक्टर द चीफ, जो कि स्टेडियम में सबको हेड कर रही होती है। उनको पता चलता है कि शी हैज़ बीन कीपिंग सम सीक्रेट्स, सम डार्क सीक्रेट्स ऑफ हर ओन, एंड देयर माइट बी अ मॉन्स्टर ट्रैप्ड इन द स्टेडियम एज वेल। देयर आर ऑल्सो सम फ्यू अदर कैरेक्टर्स एज वेल जिनकी स्टोरी लाइन है, बट अगर आप शो देखोगे तो आपको पता चल जाएगा व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। नाउ आई विल टेल यू अबाउट माय I loved and enjoyed season 2. Season 2 was much way better than season 1. But when I saw season 2, oh my god, my mind was blown. And I was like, I have to watch the next episode. I have to watch this episode. I love all the scenes where he's crying, like the emotions. Oh my god, I was crying with him because overall the show is amazing. If you're looking forward to watch something on this weekend, and if you like something dark, bloodshed, violence, monsters, emotions, friendships too, anything like that, survival and all, so I think you should definitely like check out Sweet Home. The best part of the show, जो कि मैं बताना भूल गई, पूरे शो में गोमिन्सी इज ट्राइंग टू फाइंड हर ब्रदर। सीजन 1 के एंड में उसके साथ क्या हुआ हमें पता ही नहीं चला। वॉज ही अलाइव, वॉज ही डेड, ही वॉज टर्निंग इनटू अ मॉन्स्टर, बट इन द एंड we see that Lee Eun-hyo has returned. I love him. That was over, but I do. It's really good. And I hope next season में obviously 3 main heroes, one are Song Kang, one is Lee Do-hyun, and third is Go Min-si are going to be there. So it will be fun. I think third season we'll see the fight against monster versus monsters. But it was really thrilling, amazing, awesome. I would give it a 9 out of 10. If this video ever blows up or like I'm able to like get audience for my episodes, I will definitely make a Song Kang cake and I'll cut it for you guys because I love him. I'm obsessed with Song Kang. So this is the end of episode 1. I hope आपको ये अच्छा लगा होगा मेरा रिव्यू, एंड अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगे जो मैंने अभी शुरू की एपिसोड 1, so please do comment and like, share and subscribe to my channel to see more of my content. Also let me know your recommendations and what are the shows that you are watching right now. So that's all for today. Bye. Now I'm gonna enjoy my food.